Good morning all of you. I am Rajiya Pathan from Gyanmanjari Vidyapith standard 4. So students, in the previous lecture में हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 7 एंड वर्कशीट नंबर 8 है वो कंप्लीट किया था, राइट। इन द वर्कशीट नंबर 7 हम लोगों ने फ्रैक्शंस इन द रियल लाइफ सिचुएशन लर्न किया था। आफ्टर देन उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था रियल लाइफ सिचुएशन व्हाट इज दैट। ओके, इन दैट आई विल गिवन यू होमवर्क। वर्कशीट नंबर 12 वर्कशीट नंबर 8 में C1 था, वो आप लोगों का होमवर्क था। आई होप सो योर होमवर्क इज कंप्लीटेड। नाउ टुडे विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 9, न्यूमेरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स आज हम लर्न करेंगे। हाउ टू राइट द फ्रैक्शंस इन द नंबर्स। नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे लिख सकते हैं वो भी हम आज लर्न करेंगे, ठीक है। So in that a fractions has a two numbers. Fractions में how many numbers are there? Two numbers are there. Total number of the parts in the wall is the called denominators, and the parts of that make up a fractions are called the numbers. A fractions is written as a numbers over a denominator with the horizontal in between. Now that one I'll show you, so easily you all are understood. Okay, so that things I'll show you. Worksheet number 9, page number 30. Okay students, numerator and the denominators, worksheet number 9. So in that, how to write the fractions in the numbers. So a fractions has two numbers. Fractions में how many numbers are there? Two numbers are there. Total number of the part in a whole is called the denominators. जो total number है जिसको whole total number of the part की जो total number है उसको हम whole बोलते हैं. It's called the denominator. And the part make up the fractions are called the numerator. जो part हम बनाते हैं उसको हम क्या, वो fractions बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, numerator. A fractions is written as a numerator over horizontal with the denominator with the horizontal line in between. Now see, I'll show you. 3/4. 3/4 numerical number is the 3 and denominator number is a 4. Number of the part that make up the fraction. Now numerical number है वो कहाँ पे आएगा, up आएगा, और denominator number है वो down side आएगा. That is got it everyone. Now filling the blanks. Filling the blanks column. Now see, one more things I'll explain here. 3/4 that means whole part के हम लोगों ने 4 part किए, ठीक है. Total number of the parts are 4 is there. Okay, और उसमें से हम लोगों ने टिक कर कितने किया, how many are there? 3. That's the reason what we written here 3/4 because of the 3 parts is the shaded here. Okay, got it? Numerical number में हम 3 लिखेंगे and denominator number में हम क्या लिखेंगे, what we written here 4. Now filling the blanks columns. Okay, filling the blanks is here fraction, numerical, denominator. So where we write the numerical, we have to write upside, right? So here we have to write 5, and denominator number is 7, so we have to write downside. 5/7. 5/7. 5/7 is a fraction. Now 2 already here written here. 3 is a denominator, so here we have to write 3 and here we have to write 2. 2/3.
4 is a numerical, write it upside, write it, 9 is a denominator, write it downside. Okay, 4 upon 9. 5 already written here, numerical is here, so we have to write in the numerical place and we have to write 6 in the denominator place. After that, 3 and 5. 3 and 5 here, so here we have to write 3 numerical, 5 denominator. We have to write in the denominator 8 place and we have to write 3 in the numerical place. After that, 1 we have to write here, 1 upon 6, we have to write 6 here in the denominator place. Okay. Now next one, 4 and 7, write it here 4 in the numerical and denominator places 7, 4 upon 7. Write it here 1 upon 7. Seven upon 9. Okay. Okay students, so look at this. First look at A to F and write it down in your notebook. I'll give you 2 minutes. Sorry, I'll give you half an minutes. Half an minutes में इतना तो complete हो जाएगा आप सबका. Okay, now next one. E to J. Okay students, now next worksheet, I hope so your writing work is completed. Now next worksheet number 10, represent fractions in the number. Represent fractions in the number. So in that, how do we present a fractions in the number? So here is one example, one rectangle shape is here. Here is a different parts. How many parts are there? That one we have to count first. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now what we have to do? First of all, count and identify total number of the part as a denominator. Denominator में हम उसको D भी लिख सकते हैं. We have to write D also. D is equal to 6. D is equal to 6. Denominator 6. Why we have to written here 6? Because of the total numbers are 6. Now step 2. Count and identify numbers of the shaded as the numerical. So here is how many parts are shaded here, 1 and 2. Numerator number is 2. Numerator number is the
2. So written a fractions written in the numerical form, numerator is equal to 2 and denominator is equal to 6. So here 2 upon 6. This one is a fraction. Okay. Now here one example. Represent the fractions below in the numbers. Fractions को हमें नंबर में represent करना है. So first of all, this one is a triangle shape, right? So we have to identify how many parts are there. Now count with me. 1, 2, 3, 4. So total number is 4. So we have to write here 4, right? Because of the total number, denominator में हम लिखेंगे 4. Shaded parts, how many are there? 1, 2 and 3. So here we have to write 3. 3 upon 4. 3 upon 4. Next one is, count it here. Total number 1, 2, 3 and 4. So in the denominator place we have to write 4. Shaded part is 1, so we have to write here 1. 1 upon 4. This one is a fraction. Next one. How many parts are here? 1, 2, 3, 4. So in the denominator place we have to write here 4. Shaded part is 1 and 2. So here we have to write 2. 2 upon 4. Square shape 1 and 2. Total number of the parts are 2. So here we have to write 2. Shaded part is 1. So 1 upon 2. Total number of the part 1, 2, 3, 4, 5. So here we have to write 5. Shaded part is 1, 2, 3 and 4. So what we have to write here? 4. Got it? Next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total number is 8. So here we have to write 8. Shaded part is 1, 2 and 3. So what we have to write? 3. Okay students, now look at this. Look at this everyone. I'll give you a half a minute. Complete it fast. Okay students, now next worksheet number 11, convert a fraction from numbers to pictures. अभी हमारे पास fractions को हमें numbers हमारे पास है, we have the numbers, we have to convert them as a picture में हम उसको convert करेंगे. So in that represent the given fractions in the पिक्टोरियल फॉर्म. अभी हमें इसको हम किस में करेंगे? पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. रिप्रेजेंट 3/8 इन द पिक्टोरियल फॉर्म. सो इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिनोमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई डिनोमीटर. सो इन दैट डिनोमीटर इज 8. क्या है उसमें? 8 है. Denominator is equal to 8.
Now denominator means total number of the parts. Denominator means क्या होता है? What is meaning of the denominator? That means total numbers means उसके हमने जितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है वो total number of the parts. Draw a rectangle and divide into as the many parts as the denominators. Now what we have to do? We have to draw one rectangle. अभी हम उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? जितने डिनोमीटर्स टोटल नंबर ऑफ द डिनोमीटर्स है उसमें. So how many we need to divide the rectangle into 8 parts. Why we have to need 8 parts? Because of total number of the denominator is 8. That's the reason हमने क्या किया? यहाँ पे उसको डिवाइड किया 8 पार्ट में. Now identify the numerical number. Numerical number is 3. So numerical number numerical is the number of the parts being consider color as many parts as the numerical. Now what we have to do, since numerical is a 3, so we have to do color 3 parts. What we have to do, हम 3 parts में क्या करेंगे? कलर्स करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने किया 1, 2 and 3 like that. So ये कन्वर्ट हो गया डिनोमीटर फ्रैक्शंस टू पिक्टोरियल फॉर्म. फ्रैक्शंस में से पिक्टोरियल फॉर्म में इसको हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया. नाउ हियर वी हैव टू डू द सम प्रैक्टिस हियर. Represent the following fractions in the pictorial form. So what we have to do, first of all we have to identify the denominator is that one is a 5. So what we have to do, we have to draw one rectangle. मैं यहाँ पे स्केल से नहीं कर रही हूँ, लेकिन यू हैव टू डू विद द स्केल. ओके. नाउ हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में, बिकॉज ऑफ द डिनोमीटर इज 5 पार्ट्स डिवाइडेड. ओके. 1, 2, 3, 4 and 5. Now how many parts we have to shade it here? 3. So shade it out. Numerical is 3. That's the reason we have to shade it only 3 parts here. Okay. Next one. 2/3. So we have to draw one rectangle. थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे. आफ्टर दैट शेड इट आउट दैट 2 parts only. Okay. Now next one, 6/7. One, 2, 3, 4, 5, 6. Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shade it 6 part. 6 parts को हम क्या करेंगे? शेड करेंगे. ठीक है.
4/7. Again we have to draw one rectangle. Now यहाँ पे आप डिफरेंट कोई भी शेप्स भी ले सकते हो, बिकॉज ऑफ द हियर इज नो मोर प्लेस, ज्यादा प्लेस नहीं है, दैट्स रीजन हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे. ठीक है, 3, 4, 5, 6. Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shaded 4 parts. 1, 2, 3, 4. फोर 1, 2, 3, 4 पार्ट में हम शेड करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 8/9. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अभी हम एक पार्ट में उसको शेड करेंगे. Okay. Now 2/7. Again draw one rectangle. Okay. 7 पार्ट में उसको डिवाइड करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shaded 2 part only. Now look at this, everyone. I will give you 2 minutes. Complete it. गुड. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने आज कन्वर्ट द फ्रैक्शंस फ्रॉम नंबर टू पिक्चर्स. फ्रैक्शंस को हमने पिक्चर्स में कन्वर्ट करना भी सीखा है, एंड ऑल्सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द नंबर्स टू पिक्चर्स. फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना भी सीखा है. ठीक है, नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज इन द वर्कशीट नंबर 11. वर्कशीट नंबर 11 में जो G, H, I and J सम्स है वो आप अपने आप से करोगे. एंड आफ्टर दैट वर्कशीट नंबर 12. इन अ वर्कशीट नंबर 12 में फिलिंग द ब्लैंक्स कॉलम्स है. ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है रिकेप वाला,
उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक से ऑलरेडी जो हम लोगों ने लर्न किया हुआ है रिकेप पेजेस है, सो रिकेप है वो आप लोग अपने आप से करोगे एंड इसके आंसर से मैं क्या करूंगी व्हाट्सएप में आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सो होमवर्क है वो बिफोर 3 o'clock आप लोगों को हमें एनी हाउ सबमिट करवाना है और आप लोग आई होप सो आप अपना होमवर्क बहुत ही अच्छे से एंड प्रॉपर वे में करोगे और होमवर्क बिफोर 3 o'clock हमें सेंड करोगे। Okay everyone, have a nice day. Bye everyone. Complete your homework on time.